Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were discussing short-run production function and law of variable proportion. Today we will discuss the importance of the stages of production. In this section we will learn that which particular stage is good for the company to use or to produce in that stage. So first stage of production will start from the first labor to the fourth labor. This represents first stage of production. At fourth labor, both MPL and MPL are equal and the company is manufacturing total 60 units of output. Let me take you back to the table. This is the data table for the short-run production function, and the green bracket represent the first stage of production, which is starting from the first labor and ending at the fourth labor. So at fourth labor, total output produced, that is 60 units. APL of the company is 15. This is equal to the MPL of the company, which is also 15. So first stage of production is starting from first to the fourth labor, and the total output produced is a 60 in the first stage of production, and the point at which both APL and MPL are equal, that is the end point of the first stage of production. Now the question is this, that whether this stage of production, first stage of production, is good for the company or does not good for the company. So this is not a good stage of production. Why this is not a good stage of production? Because in the first stage the company is using maximum 4 units of labors to utilize the 5 machine, and the company is manufacturing 60 units of output. So now if the producer is using just this first stage of production, so the company can produce maximum 60 units with 4 labors and 5 machines. This is the total maximum output level, and now the company stop hiring more labor. So when the company stop hiring more labor, it means the company is not fully utilizing the available machine. Still the machine has the capacity to absorb more labor. Still the machine can produce more. Still the inputs, labor and capital, can produce more. Look, the fifth labor gives 70 units, seventh labor 75. So it's mean now in the first stage, which represented by the green bracket, producer stop hiring. So the maximum output of the company is 60 units. And now producer is not hiring more labor, so output stop here. So that is why in the first stage of production, producer cannot produce the maximum possible output with the specific inputs and labor. And when producer cannot produce maximum output, so we cannot say that this is a good stage of production. Means still the machine has the capacity to absorb more labor. Producer has to increase labor and increase the output from 60 to 75. But producer stop hiring at fourth labor. When he stop hiring labor, so the output does not increase to the 75 unit. So company is losing extra 15 units. Company is giving up, sacrificing, losing 15 extra units. Company is not manufacturing. Company stop hiring at the first stage of production. So that is why I am saying that first stage of production is not a good stage of production. Ma igapra dobara dar zubani dari wazih mein kunim importance of the stages of production. Bayi mana ki bayad company dar kodam stage tawlid kuna, ta kodam stage labor ra izafa kuna. کدام سٹیج مهم است. خو ما از اول سٹیج شروع کردیم. اول سٹیج او سٹیج است که او از اول لیبر شروع میشه و با 4 لیبر ختم میشه. توتل آوتپوت که در اول سٹیج کمپنی تولید میکنه و 60 یونت است. او اون نقطه که اونجا
फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खत्म मेशा APL बराबर ब MPLS मा शुबारा दोबारा ब टेबल आवर देम ये अवलीन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है कि ब ग्रीन ब्रैकेट मा निशान दादेम आज अवल लेबर शुरू मेशा और बचारों लेबर खत्म मेशा इन जो टोटल आउटपुट की तौलीद कंपनी तौलीद में करना वो 60 यूनिट्स है। APL बराबर ब MPLS ये हुदूद या हद अव्वल स्टेज आली ये स्टेज मुहिम कि मुहिमनेस बा आया कंपनी दरी स्टेज तौलीद कुना कि न कुना हो कंपनी दरी स्टेज बाय तौलीद न कुना ये मुहिम स्टेज नेस इल्लत यस कि दर फर्स्ट स्टेज कंपनी ओनली सिर्फ 4 लेबर रा इस्तेमाल कर और मैक्सिमम आउटपुट की तौलीद कर मेरा वो 60 यूनिट है। बाद जी प्रोड्यूसर इस्तेमाल करदा ने लेबर रा बंद कर खो अगर प्रोड्यूसर दिगर लेबर इस्तेमाल न में कुना हो इजाफी आउटपुट आज 10 मीता चेरा के फैलन मशीन 5 मशीन कियास वो जरफियत दारा के पंजुम और शशम लेबर रा एब्जार्ब कुना इस्तेमाल कुना अगर कंपनी पंजुम लेबर रा इस्तेमाल में कुना हो आउटपुट कंपनी आज 60 यूनिट्स बस 70 यूनिट इजाफा शुरू मेरा अगर शशुमरम इस्तेमाल कुना हो आउटपुट आज 70 बस 75 इजाफा शुरू मेरा यानी माना कि कंपनी की मशीन कियास ओ जरफियत पंजुम और शशुम लेबर दारा बायद वो इस्तेमाल शवा कि आउटपुट कंपनी इजाफा शवा आज 60 ब 75 यूनिट खो लेबर प्रोड्यूसर चिकर प्रोड्यूसर इंजा इस्तेमाल करदा ने लेबर कम कर और वो मेगा के बस माँ ये मशीन बचार लेबर पेश में चलेम और 60 यूनिट मैक्सिमम इजाफा कदा मेरम अजीज याद माना में तानम की इजाफा कुनम को बई वजह कंपनी 15 इजाफी आउटपुट आज 10 में था चेरा कि वो पंजुम और शशम लेबर रा इस्तेमाल न में कुना बई वजह आउटपुट कंपनी मैक्सिमम न शुदा मेरा और ये अव्वल स्टेज किया वो मुहिम स्टेज ने बायद कंपनी दरी तौलीद न कुना खुद दोम स्टेज importance of the second stage of production is starting from the 4th labor and ending at the 7th labor where MPL is 0 and both APL and MPL are falling but positive. Second stage is good stage of production. Second stage is represented by the blue bracket. Okay, about the second stage I put some information that second stage will start from the 4th labor and end at the 7th labor. And the maximum output that the second stage will produce, that is 75 units. The MPL of the 7th labor will be 0 in the second stage, end point. These are the information and we represent the second stage by the blue bracket. This is a good stage of production. Why? Let me take you back to the data table. This green bracket represents first stage. Blue bracket represents second stage of production, which is starting from the 4th labor and ending at the 7th labor. The total output of the company, that is 75 units, and the 7th labor additional output is 0. This is the end point of the second stage of production. This is good stage of production. Why? Why this is good stage of production? Yeah, this is very clear. Now look here, in the first stage of production maximum output was 60 units. But in the second stage maximum output is 75 units. 75 is more than 60 units. So this is a good stage. And other reason that this is a good stage, that in the second stage of production, producer fully utilize the available labor and capital. Fully utilize the labor and capital to maximize the output, to produce the maximum possible output. So that is why this is good stage of production. Producer is managing MPL and APL. Producer is comparatively checking the number of labor and the number of machines. Producer in the second stage fully utilize both labor and capital to maximize the output. Though this is the problem in the second stage, that APL
and MPL is diminishing, decreasing. In the second stage, APL 14, 12, 10, MPL 10, 5, 0, this is diminishing, decreasing, but still this is positive. Positive in the sense that some output is increasing, though this is less. Output is increasing at decreasing rate, but it is increasing. Means fourth labor 60 unit, fifth 70, sixth 75. So it means this is good to hire the fifth and sixth labor because the output is increasing, though this is increasing at a low rate. Increasing at low rate, but it increase. So second stage of production is the good stage of production. Why? Because the producer hired the required labor for the available machine. The producer hired the required labor to fully utilize both labor and capital and produce the maximum possible output. And producer makes sure. What is the sixth labor output? 75. And fourth labor 60, first stage. Second stage 75. 75 is more than 60. So this is a good stage of production. And APL and MPL are decreasing, but still this is positive. Means the fifth labor give extra output 10 units, but this is giving something. The sixth labor give extra output 5 units, but this is giving something. So it's mean the second stage of production is a good stage of production because the output is increasing. Though output increase at decreasing rate, but this is increasing. ما ایرا دوباره در زبان دری تشریح میکنیم. Second stage of production به این معنی که یہ وہ stage of production است که از چهارم لیبر شروع میشه و به استخدام کردن هفتم لیبر ختم میشه. وہ نقطه که اونجا MPL هفتم لیبر وہ صفر است. اضافی آوتپوت هفتم لیبر صفر است. او total output به 75 میرسه. Maximum possible output. در second stage اگر میبینیم APL و MPL کم شده میره. خب ये मुस्बत است यानी इजाफी लेबर कम आउटपुट इजाफा कदम मेरा आउटपुट को इजाफा कदम मेरा कम अस को इजाफा कदम मेरा बई वजह दोम स्टेज के एस MPL और MPL कम शुदा मेरा खूब मुस्बत अस यानी یک कम के अंदाजा आउटपुट को हतमन इजाफा میشه बई वजह खूब अश के लेबर इस्तेमाल शवा और सेकंड स्टेज के एस ये मुहिम स्टेज production است. چرا ما اینجا دوباره میگم که در دوم stage producer تا اون نقطه لیبر را اضافه کده میره که به اون که تا اون نقطه output اضافه شده میره. یعنی پنجم او ششم لیبر را که استخدام کرد output از 60 به 75 یونت اضافه شد. خو output به کم شرح اضافه شده میره. خو اضافه خو شده میره. So this is good to hire the labor. यानी ये खूब है कि बायत पंजम और शशम लेबर इस्तेमाल शवा. खुदोम स्टेज बई वजह मुहिम है कि दरी स्टेज प्रोड्यूसर लेबर और कैपिटल रा फुली खूब इस इस्तेमाल में कुना. प्रोड्यूसर की जरूरत ब लेबर दारा उरा इस्तेमाल कदम मेरा दर दोम स्टेज वो उकदर लेबर इस्तेमाल कर कि बहु कंपनी इजाफा जरूरत दारा आउटपुट रा मैक्सिमम रसीद आउटपुट रा और मैक्सिमम आउटपुट रा तौलीद कर. मा दोबारा मेगम के दर दोम स्टेज प्रोड्यूसर बऊ अंदाजा लेबर इस्तेमाल कर कि बऊ अंदाजा कंपनी जरूरत दारा और हर दो इश लेबर और मशीन खूब इश इस्तेमाल शुदा मेरा आउटपुट ब मैक्सिमम रसीद अगरचे आउटपुट ब कम शरह इजाफा शुदा मेरा खो बायक अंदाजा हो इजाफा शुदा मेरा APL और MPL कम शुदा मेरा और मुस्बत हर इजाफी लेबर या इजाफी आउटपुट में था MPL इजाफा शुदा मेरा और APL कम शुदा मेरा हो मुस्बत यानी मतलब फायदा दार लेबर. वही वजह दोम स्टेज मुहिम स्टेज चिरा कि लेबर प्रोड्यूसर उकदर लेबर इस्तेमाल कर कि बहु कंपनी जरूरत दार. ये सेकंड स्टेज मुहिम स्टेज प्रोडक्शन शुरू. Ali third stage of production, this is not a good stage of production. It starts from the seventh labor point where MPL is 0 and after that seventh labor, eighth labor, ninth labor, total output will start to decrease. MPL will get negative.
additional productivity of the 8th labor is negative. So third stage is starting from the 7th labor onward, and MPL will get negative, total product will start to fall. This is not a good stage of production. Why third stage is not a good stage of production? Let me take you the table. Third stage represented by orange bracket, and this is start from the 7th labor onward, 8th, 9th, 10th. This is not a good stage. Why? Yeah, this is very clear. When producer hire 8th labor, total output start to fall. So if the output of the company is decreasing, so this is good to hire the labor? No, this is not good. It's mean in third stage, output is decreasing. Additional productivity of the 8th labor, MPL, is negative. This is loss to the company. APL is also diminishing, decreasing. So third stage is not a good stage of production because the company is working for earning profit. Company is not working for losing profit. And third stage is just loss to the company. In third stage, the labor hired is unnecessary labor. This is more than the requirement labor. So company does not hire more than the requirement labor. Company will not increase labor when its productivity is 0 or when its productivity is negative. So that is why we are saying third stage is not a good stage of production, because the output is decreasing, MPL is getting negative, APL is decreasing, and company is working for output. Company is not working for loss. So third stage labor is more than the requirement because machine is fixed and labor is increasing. Labor is overcrowding. So that is why the third stage is not a good stage of production. Ma'ira dobara dar zubani darim megam. Third stage of production, वो stage of production है कि वो मुहिम या good stage of production नेस. ये शुरू आज हफ्तम labor में शा वो नुक्ता कि उनजा MPL हफ्तम labor सिफरस onward के कंपनी दिगर लेबर हारे इस्तेमाल में कुना वो मनफी असर आउटपुट कंपनी दारा. MPL हश्तम लेबर किया वो मनफी में शा आउटपुट हश्तम लेबर पाइन रा रवान में शा आउटपुट कंपनी पाइन रा रवान में शा चेरा कि कंपनी को लेबर तनख्वाह में था, मेडिकल फैसिलिटी में था, ट्रांसपोर्ट में था, रिहाइश में था, फैसिलिटीज में था, इंसेंटिव्स में था, को आउटपुट वो मनफी है, नेगेटिव है. चेरा की कंपनी बहु लेबर जरूरत न दारा वो ज्यादा अज जरूरत लेबर है. चेरा की मशीन साबित है और बेरुबार लेबर इजाफा शुदा मेरा. वही वजह ये थर्ड स्टेज के बाद ऑरेंज ब्रैकेट निशान शुद्ध ये मुहिम स्टेज नेस इन आउटपुट कंपनी पाइन रवान में शा MPL मनफी में शा और कंपनी ब मनफी आउटपुट कारना में कुना कंपनी ब मुस्बत आउटपुट कार में कुना दर स्यूम स्टेज लेबर अज जरूरत ज्यादा इस्तेमाल शुद्ध सर लेबर मसारिफ कंपनी जोड़ में शा और आउटपुट लेबर मनफी सिफर अमनियस मनफी बई वजह तावान ब कंपनीस को सेम स्टेज क्या सो मुहिमनेस अव्वल स्टेज क्या सो हम मुहिमनेस दोम स्टेज मुहिमस दर अव्वल स्टेज कंपनी वो कदर लेबर इस्तेमाल न कर कि कंपनी जरूरत दारा बई वजह आउटपुट कम तौलीद शुदा मेरा ये मुहिम स्टेज नेस दर सेम कंपनी अज जरूरत ज्यादा लेबर इस्तेमाल कर बई वजह वो हम मुहिम स्टेज नेस दोम वो स्टेजेस के दर वो कंपनी वो कदर लेबर इस्तेमाल कर कि कंपनी जरूरत दारा और हर दुइश इनपुट लेबर और कैपिटल रा बखूब रविश इस्तेमाल कर मेरा और आउटपुट ब मैक्सिमम रसी. ये हो इम्पोर्टेंस से स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन शुड. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन cheers. In the long run production function, the company can change both inputs, labor and capital. In here we do not keep the capital fixed. In the long run production function, the company in the long run production function, if the producer want to increase supply, so producer can increase supply by increasing both input factors, labor and capital. In the short run production function, producer were not in a position to change the capital. But in the long run production function,
company producer is in the position to increase the capital size because producer या company has the budget. So this is the difference between the short run production function and long run production function. In the short time period, producer does not have the budget to increase the size of the business, so that is why we assume that size will remain fixed. But in the long run production function, producer carry the budget. Producer has the budget to increase the machinery, to increase the building, to increase the office. So producer has the capacity to increase the size of the factory. So producer can increase supply by changing capital as well. So in the long run production function, producer can increase both inputs, labor and capital. But in short run, producer cannot increase capital. I am again repeating, in the long run mean long time period. In the long time period, producer have the budget. So if demand increase, producer can increase supply by changing both inputs, labor and capital. For example, demand is more, so producer install another company. Producer install another factory, purchase new building, new offices, purchase new equipment, machinery, hire more permanent stock to increase supply. So in the long run, producer can increase supply by increasing both inputs, labor and capital. So this in the short run, producer were not in a position to increase the size. But after long time, producer accumulate the budget and now producer can increase supply by changing capital size as well. Ma ira dar zubani dobara megam long run production function bahi mana कि बाद अज यक तवील मुद्दत अगर कंपनी में ख्वाह कि आउटपुट खुद रा इजाफा कुना चेरा कि दर बाजार तकाजा ज्यातस खो दर लॉन्ग रन वक्त की तकाजा दर बाजार ज्यात मेशा खो प्रोड्यूसर मेताना की सप्लाई खुद रा ज्यात कुना दर लॉन्ग रन वो मेताना के लेबर रम इजाफा में कुना और मेताना के मशीन रहम इजाफा कुना चेरा के आले वो बुदीजा दारा दर शॉर्ट रन बुदीजा न बुद खुद दर लॉन्ग रन बेशार तवील मुद्दत गुज़श्त बेशार तवील जमान गुज़श्त आले कंपनी बुदीजा दारा तकाजा दर बाजार ज्यादा शुद कंपनी ज़र्फियत दारा के साइज कंपनी रा इजाफा कुना और सप्लाई रा इजाफा कुना कंपनी ज़र्फियत दारा के हर दुइश इनपुट्स लेबर और कैपिटल रा इजाफा कुना और सप्लाई रा दर बाजार इजाफा कुना दर शॉर्ट रन ज़र्फियत कंपनी न बुद के एक दोम फैक्ट्री जोड़ कुना और दर लॉन्ग रन ज़र्फियत कंपनी अस की एक दोम फैक्ट्री इंस्टॉल कुना और सप्लाई रा दर बाजार इजाफा कुना ये सिर्फ दर लॉन्ग रन यस कि कैपिटल हम इम्कान दारा की इजाफा शो और लेबर हम इम्कान दारा की इजाफा शो।